Okay, so we started functions in the last class. We found the output from the input and the input to the output, and then we solved some past paper questions to just get an idea of how the questions are coming in. And then for today's class, in the same functions topic, we have to learn how to get the inverse function. It is also a very simple procedure you have to follow. You will get the answer, and you will learn how to find composite functions. सर कंपोजिट फंक्शंस क्या है? Composite functions है ना, करेंगे. Inverse function, let's suppose your function is fx. I'm giving you the question. Let's suppose fx is equals to 3x plus or 3x minus 10. They're asking you to find inverse f minus 1. When you see the power minus 1 over the name of the function, this means they're talking about the inverse. सर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि इन्वर्स करना है. नहीं, they would write this down. Find this f power minus 1. सर ये इनवर्स फंक्शन होते क्या है? It is just the ulta काम. Inverse of anything, let's suppose if you have 5, a constant 5. The inverse of 5 is just the reciprocal, 1 upon 5. Yeah, even more if you want to go in detail about inverse. I don't know if you are. So if anything is multiplied by its own inverse, you will get answer 1. For example, 5 multiplied by its own inverse, you will see it will answer is getting, you will get 1. So yeah, so inverse is doing the opposite thing of what the original thing is actually doing. 5, if you multiply something by 5, it will multiply it by 5. But if you are multiplying with the inverse of 5, it will reverse the effect of 5. समझ आ रही है? So inverse just reverse. हाँ बोलो. तो इसका आंसर 10/3 होगा ना? ताकि बंदे सबर तो करो. नहीं, it won't be 10/3. So now we get back to the business. So what do you do? सपोज करेंगे ना y आ You would जाएगा. suppose, yes, you would replace fx with y. So this would become y is equals to 3x minus 10. Then step 2, make x subject. So now y minus 10 would move plus 10 is equals to 3x. And then x, 3 would go over there and divide. So y plus 10 divided by 3. सर फिर y को फिर y की जगह डाल देना x वगैरह में. Yes, now replace. These are the only 3 steps that you will need. You would replace y with x and x with f Y. inverse. Inverse. So this would become x plus 10 upon 3 is equals to f inverse. क्लास में क्या इब्राहिम वेटिंग में उसको इन करते हैं. अच्छा, these are simple 3 steps that you will follow for any function. Okay, so these are the 3 steps that you will need for any finding the inverse of any function. सर जी, हमने ऐसे क्यों नहीं किया 1/3x minus 10? 1/3x minus 10. जी सर. क्यों ऐसे करेंगे? सर वो 3x minus 10 फंक्शन है, उसका इन्वर्स कर देंगे. दोनों को आपने अपसाइड डाउन कर दिया. जी सर. वो मैंने लॉजिक आपको बताई थी, बैकग्राउंड बताया था, लेकिन द सेम थिंग एग्जैक्टली कैन नॉट बी मतलब अप्लाइड. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, ये तो एक फंक्शन है ना. काम उसका वही है कि इट विल रिवर्स द इफेक्ट ऑफ व्हाट fx इज डूइंग. सही है, लेकिन एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व नहीं होगा. डेफिनेटली कोई फर्क तो होगा ना. दिस इज हाउ यू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. सर लास्ट में हमेशा आंसर ऐसे आएगा ना जिस तरीके से आपने लिखा हुआ है. फिर f इनवर्स x आ जाएगा y की जगह. हाँ, replace. Let's take another example. Let's suppose it is gx is 5 upon 2x plus 7. I've slightly complicated it. Okay, so now they're asking you find g minus 1.
First step, replace gx with y. And now you will move things around, simplify, and make x the subject. So 2y plus 7 would go over there and Yes. multiply. Is equals to Expand. 5. 2xy plus 7y is equals to 5. Yes. And then 7y, you 2xy is equals to 5 minus 7y. keep in mind you have to make x the subject. So x Yes, is now yes. over here. 5 X, minus y divided by y. 2x. Sorry, yeah, 2y. 2y was being multiplied with x. The 2y would over there and divide. The last तो step, सर फिर आंसर आ जाएगा f इनवर्स x अच्छा इक्वल टू 5 yes. Look, he's telling me 2x plus 7 is equals to 5 upon y. It's about algebra. 2x is equals to 5 upon y minus 7. Now, if I take LCM on the right side, this would become multiply by y, multiply by y, right? And now the denominator is same. So this becomes 5 minus 7y upon y and 2x. And now, if you move the 2 on the other side, 5 minus 7y upon 2y. Isn't it the same? जी सर Same answer आता. Both are सर logically पहले वाला correct. ज्यादा आसान लेकिन मेथड है. सर Yes, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि जी. जब आप 5 माइनस 2xy इज इक्वल टू 5 माइनस 7y, आप सबसे पहले आप y नीचे लेकर जाओगे तो 5 माइनस 7y ओवर y हो गया. फिर आप उसके बाद 2 भी साथ नीचे लेकर जाओगे तो फिर 2y हो जाएगा. ऐसा होगा ना? जी जी. y और 2y को साथ ले ठीक जाओ है या सर. अलग अलग ले जाओ, you will get the same answer. ओके You have सर. everything right on the other side. You want only x on the left side. So I have replaced the y with x and the x with g inverse. This is the answer. So the steps won't change. Whatever the equation that they have given you, if they ask you to find the inverse, you will have the same 3 steps. Okay. The next part, they can be the same. Let's suppose if they ask you find g minus 1, 2. So you have already got the g inverse function, and the input to the g inverse is now 2. So g power minus 1, 2 will be equal to 5 minus 7 times 2 upon 2 times 2. And you simplify it. So 5 minus 14 upon 4. So minus 9 upon 4. This is माइनस the 9 answer. अपॉन 4. मतलब बाकी basic everything is the same. You do the same thing with the g inverse what you do with the g. This is called your inverse function. Now the domain they have given you, the domain is the x value. The domain is 2. X value is 2, and the range, the output that we have gotten, it is minus 9 over 4. माइनस 9. ओके. That's it. Now the turn of composite functions. सर ये जी इनवर्स वगैरह जो इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह इस जो टॉपिक है ये अलजेब्रा में ही आता है ना? जी. You will see in the past papers, maybe you will see a separate topic for functions, but I include everything, all of this is in algebra. ओके सर. Composite functions is function inside a function. For example, they have given you two functions, x fx. की वैल्यू में x की वैल्यू है ना इसमें. रुक जाओ अल्लाह के बंदे रुक जाओ. And the other one is, let's suppose it is 5 upon x. So now there are two functions. You have two separate functions, fx and gx, and they are asking you to find fgx, or they're asking you to find gfx. So this doesn't mean that the two functions are multiplying. This does not mean that fx and gx are multiplying. This is a very common mistake. I also have made the same mistake. So these two functions are not multiplying. This means fgx and gfx means that you have an outer function. I can write this fgx like this. Fgx can be written down like this. F is the outer function
and the input to the f, you can see it is another value, another function gx. So what was it originally? It was fx. Now instead of fx, the x has been replaced by the another function gx. So this means the input is the gx to fx. So if I want to write this down, f gx means that 2 times x, x is not now x, it is now gx, 2 gx plus 10, and then you have the gx function. So 2 times 5 upon x plus 10, so this would become 10 upon x plus 10. This is the function of f gx. But the thing is, these two things are equal, मतलब बराबर होगा ना. ठीक है सर, एक और मरतबा एक और ऐसी इक्वेशन करवा देंगे। Here it is gfx. Now gfx means that the outer function is g, and inside the g function the input is fx. So this becomes 5 upon the function was 5 upon x for g. Now instead of the x, I would write fx because that is the input. So fx, now we know it is equals to 2x plus 10. this is your expression for gfx. Any questions, anyone? Now continuing it. Let's suppose they ask you to find the value. Find f g fg5. So now we already Yes. have the function of fgx. fgx पता है ना मैं पहले से. We have found it out. 10 upon x Yes, yes. plus 10. Now instead of this x हाँ. over here, we would replace it by 5. That's what they've given you. So 10 12. upon 5 plus 10. So 2 plus 10 is, सर लेकिन मैं दूसरी वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ उसमें भी यही होगा. अभी करवाता हूँ. सर कोई नई इक्वेशन, कोई नया सवाल नहीं। सबर रुका. Now another one. Let's suppose find x when g of x is equals to 2. Let's suppose this is the question. So now we have already found the function of g of x, right? We replace it. We use the Yes. function 5 upon 2x plus 10. And now you have given you the g of x value. So this value, we know this value. It is 2. Now you will solve it the same as the usual algebra. You will move it on the other side, multiply. So 4x plus 20. सर तो आपने g of f of 2 क्यों नहीं लिखा? इसने आउटपुट दिया था. इसने देखो, इसने रेंज दी थी. It did not give me the, it is asking you for the input when the output is 2. तो आउटपुट ये पूरा होता ना. इनपुट तो मांगा है इसने. So minus ठीक है. 15 upon 4. Yes. सर रेंज क्या होती है? Range is output. fx values. सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ. You should be able to identify x is your domain, fx the y values, the output is your range. तो सर एग्जामिनर कोई सवाल मतलब क्वेश्चन में लिख कर देगा कि इसमें इन्वर्स करना है, इसमें कंपोजिट? जी ऐसा ही है. These are past paper type question. ओके सर। इतने हाई लेवल डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन आई ऑलवेज से दैट you do the difficult ones, then the easier ones, the things that you would actually see would become more and more easier. Okay, while you're doing the practice, go an extra mile. एक्स्ट्रा काम कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लो, मुश्किल वाली चीज़, ताकि जो फिर आपके लिए आपके लेवल का है that becomes even more easier. So now you have seen every possible outcome, everything over here, gfx, fgx, and finding output when input is 5, finding the input when output the gfx is 2. Okay.
Now this topic is, you can see, complete the theory part. We just need to do some more practice. This question, you people can try do the part 2, the inverse part. Find the inverse. You have the steps, and if you follow the steps, it's just basic algebra, moving things around and then replacing. Try this. Take 4 minutes till 9:45. Everyone. Part B. Part A, we have already done this. The answer was 1/4. Part B. Finding inverse. Forget about the C and D right now. First of all, get the inverse. Everyone, do this. What have you found? हो गया 4x plus 3/2. हाँ मेरा भी यही आया This is सर नहीं नहीं 4 पूरा के इक्वेशन नीचे बाय लिखे 2 4 के सर नीचे पूरा 4x इक्वेशन के बाय नीचे 2 लिखे यस यस everyone got the same thing. यस जी सर. Anyone who got something else? सर मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने x4 के साथ x लगाया। Okay, let me do it as well. Y, first of all, you would replace the fx with y and 2x minus 3/4. Now you would make 4 would go over there and multiply. So 4y, 2x minus 3. Minus 3 would go over there and become 4y plus 3. Is equals to 2. And then 2 would go and divide with both of these. So 4y plus 3/2. So now you would replace the x with f inverse and y with x. Oh, sorry. Now, whoever gave this answer is wrong. Who gave me? Ahmed? नहीं अहमद ने नहीं. Hassan या अम्मार नहीं होता मेरे को. This is incomplete. You are partly correct, but overall this is the wrong answer. You can see that this cx and d, these are separate terms. You don't have anything in the denominator, isn't it? So cx is a separate thing, d is a separate thing. So you have to separate your fraction as well. So this would become 4x/2 plus 3/2. So 4x/2 becomes 2x plus 3/2. And now you compare with cx plus d. So the value of c is 2 and the value of d is 3/2. Oh bhai, oh bhai. अच्छा चलो ठीक है सर Okay, everyone? Okay, look, fx means the first part is. Anyone is saying सर something? आई थिंक मुझे आंसर मिल गया इसका Okay, what's your answer? वेट Chalo, f6 means, first of all, the original function, the outer function is f. And then the input is the another function f. And for that input, the input is 6. So you can do it separate ways as well. First of all, get f6 only, directly f6. So f6 is 2 power 6 minus 3, right? You will replace the value of x as 6, which would be 8. 2 power 3, which would be 8. So now you know the value of f6. Now if f6 is 8, you can replace this value of f6 over here. So this would become f8 now. है ना? So f8 is 2 power 8 minus 3, which would become 2 power 5, which would become 32. This is your answer of f6. सर ये 8 कहाँ से आया? -3. First of all, I found f6. ठीक है, f6 निकाल लिया मैंने. f6 कैसे निकालूंगा मैं? I would just replace the value of x as 6. So 2 power 6 minus 3 is 2 power 3. And then 2 power 3 क्या होता है? 8 होता है कि नहीं?
जी सर, इसके बाद पूछा था ये f के बाद 8 और ये इज इक्वल टू 8 माइनस 3, ये कैसे हुआ? Now we know that f6 is equals to 8, and we want to find f6. So inside f we want to input f6, and what is the value of f6 that we have found? 8। 8। 8 रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ठीक ये है। f8 बन गया, और f8 का आंसर पे 32 आ गया. सर बेसिकली सबसे पहले एक सॉल्व करो, उसके बाद फिर दूसरा सॉल्व करो। This is also possible. This is another method. Whatever feels that you feel correct, that you feel more easy. सर इसका बीबी करा दो। Yes, B is also very interesting. I told you that inverse will reverse the effect. One more thing that you can say, f into f inverse of x will be equal to the same as x. So this means that if you are doing g inverse के अंदर आपने g डाला और g के अंदर x plus 21 है, so the inverse and the original function cancels it out and you are left off with x plus 21. मैंने बताया था ना, inverse और original, they are just the opposite of each other. So they are reversing each other's effect, cancels it out, and then you are left off with the x plus 21. This is something unique, something new that you have और learned. सर अगर आप सॉल्व करोगे प्रॉपर्ली तो फिर कैसे करेंगे? Properly solve होने का बहुत लंबा हो जाएगा. First you will get the inverse function for g. फिर first you will get the gx plus 21 as well. उसका solution आएगा, you will input into g inverse and then simplify. Eventually you will get the same as this. ओके सर। Then the last one, fx is equals to h84. Look, so fx is equals to ये तो आसान है। h84. fx is, you can replace fx, it is 2x minus 3. h84 is 5 upon 84 minus 84 4। minus 4. So 2x minus 3 is 5 upon 80. 5 upon 80 is 1 upon 16. यस। And how would you solve this now? सर ये आपने 16 लिखा है नीचे? हाँ 16 हो गया ना, सर 5 बेस times टू Yes. करके करेंगे। what सर बेस 2 करेंगे। सर बेस 2 का करेंगे। Yes, this is an exponential equation. Revise and dice is a bit. If you make the basis 2, then you can equate the power. So 16 can be written down 2 power 4. So 2 power 4, if you bring it upwards, it would become 2 power minus 4. And now the bases are same. So you can equate the powers. X minus 3 is equals to minus 4. And x would be minus 4 plus 3. So x is equals to minus 1. -7 -1 सॉरी। Yes, so only 2 marks for functions and indices combined. सर मुझे बी वाला पार्ट समझ नहीं आया। बी वाले पार्ट में आपने बस ये समझना है कि आपने इनवर्स को डाला है उसी के फंक्शन के अंदर, देखो, या इनवर्स के अंदर वही ओरिजिनल फंक्शन वापस डाल दिया. एंड आई टोल्ड यू दे बोथ रिवर्स ईच अदर. रिवर्स होता है ना, एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं. तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट किया और क्या बच गया, x plus 21. x plus 21। तो सर जी इनवर्स और जी आपस में कैसे कट होंगे? कट गया ना, दे बोथ आर इनवर्स ना. इनवर्स का जो जी करेगा, जी इनवर्स उसका उल्टा कर देगा. तो यानी कि अगर इधर f इनवर्स और f होता तो फिर दोनों f कट जाते। हाँ, और यही x plus 21 रह जाता. ठीक है सर। Any questions in the last one over here? Part C. Look, they can combine everything together: indices, functions, algebra, moving things around. This was a very good question. Look at this one, question number 4. F g x plus 1 is equals to g f x and 4 marks. Do you people want to try? यस सर। All Yes, about sir. the things properly in their places and then simplify, and the rest of it is algebra. It is, I know, a little bit complicated, complex question, but the logic and everything, you know what to do about this.
and maybe you will सर get the हम right इसमें ये कर सकते हैं कि ये जो है एफ जी इसको साइड पे करके सॉल्व करके फिर उसको हाँ, वापस में ओरिजिनल जी एफ होगा। अलग अलग निकाल लो, अलग अलग निकाल के फिर बाद में एक में डाल के सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो, गेट द आंसर। Everyone try this. I will give you 5 minutes, not more than that, because you already the class is almost over. Okay, let's see. Now there are 3 things that I'm doing it for you. Okay, first of all, I find gx plus 1. I am going to break down things. Gx plus 1 would be x plus 1 plus 4, right? Which would become x plus 5. Then सर I need मेरा भी gf. -2.1 ही आया। Okay, let's see. Gfx is equals to gfx. I will input the value of f inside g. So this would become, instead of x, it would be fx plus 4. And this would become x square minus 25 plus 4, which would become x square minus 21. Then we need fg. Fgx plus 1, right? They're asking for this thing. Which means inside f, instead of x, I will write gx plus x plus 1 minus 25. सर कुछ So समझ I नहीं आया, already have, फिनिश कर दे। क्या कुछ भी समझ नहीं आया, वापस समझाओ ना। सब करो, एक दफा पूरा करने दो। I'll explain it to you. Gx plus 1, we have found x plus 5 whole square minus 25. So now I can replace gx plus 1 is gfx is, now expand the bracket using algebra. Identities, minus 25 plus 25 cancel out, x square cancel out. So minus 10x is equals to minus 21, and x is positive 2.1. सर मुझे भी समझ नहीं आया। सर ये आंसर प्लस में क्यों आया? minus 21 divided by minus 10 क्या होता है? माइनस माइनस कैंसिल आउट। जी जी सर जी -21/10 आ रहा है ना? -21 क्या? -21/10 आ रहा है। -21 upon -10। अच्छा हाँ, सही है। Expansion, if we expand this plus वाला है ना, so this would become plus over here. This is plus, this is plus. जी सर वही कह रहा था। So the answer is negative 2.1. Okay, now explaining it again for everyone. I need gfx. I need gx plus 1. And then I would input the gx plus 1 inside f. So I am separately finding all of these and then combining everything together. gfx is over here, gfx. gfx समझ में आया ये किसी ना को? मेरी क्लास के नोट्स। Okay. Those who want to leave, they can. Yeah? Okay. Those who don't understand, do you get this part where we have found gfx? Any questions in gfx? नहीं। Okay, so this is, now we have gfx. Then I found gx plus 1. gx plus 1 is, I just replace in g. I replace it as x plus 1. So यहाँ पर भी x plus 1 and then plus 4. So I get x plus 5. So gx plus 1 is x plus 5. ये भी सही है. हाँ। Then I have to input this gx plus 1 inside f. So gx plus ओके। आया है, वो मैंने replace कर दिया inside this, in the place of this x square. This was x square. Now I would write x plus 5 whole square, because this thing is x plus 5, right? So अब ये हाँ। बन x plus 5 whole square minus 25. So now I ओके। have this, I replaced it over here. I have this, which I replaced it over here. And then I expand, simplify, and find the value of x, which came out as minus 2.1.
अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दें। सबसे पहले आपने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाली पहली इक्वेशन को लेके आपने उसको रिप्लेस किया एफ जी एक्स प्लस 1 से। यानी आपने इन दोनों को पहले सॉल्व किया, फिर आपने जी एक्स एक्स प्लस 4 को फिर जी एफ एक्स से करा। हाँ मतलब आप किसी से भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यू फाइंड थिंग्स सेपरेटली एंड देन यू ऑल इनपुट इन द इक्वेशन दैट दे हैव गिवन यू। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी समझा दें कि मैं इसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा कि मुझे किसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है। प्रैक्टिस, जी के अंदर एफ विच इज द आउटर फंक्शन, जी के बाद एफ लिखा हुआ ना, सो जी इज तो द यानी आउटर कि फंक्शन, जी के अंदर जी, एफ आएगा। तो यानी कि जी एफ वाली वैल्यू जी एक्स में आएगी, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 में। हाँ एफ की वैल्यू आएगी जी एक्स के अंदर, हाँ यही है, ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा जी एफ के अंदर। नहीं नहीं, मेरे कहने वाला सबसे पहले मैं सॉल्व किससे स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल स्टार्ट। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी, यू फाइंड दिस थिंग फर्स्ट और यू कैन फाइंड दिस थिंग फर्स्ट, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यू फाइंड दिस थिंग सेपरेटली। जब भी आपके पास ये चीज पता चल जाए, ये चीज पता चल गया, तो इनको इसकी जगह पे रिप्लेस करके सिंपलीफाई करके आंसर निकाल दो। जरूरी नहीं है आपको भाई वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से मैंने किया। जी जी, नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मकसद है कि स्टार्ट नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अगर किसी भी वैल्यू को किसी से रिप्लेस कर दूं, यानी मैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 में कौन सी वैल्यू रखूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25 में एफ के अंदर क्या डालना है जी आपने, देखो एफ के अंदर आपने डालना था जी एक्स प्लस 1, तो यहाँ जो एक्स है अ, ना, इस एक्स की जी, जगह पे क्या डालोगे, जी एक्स प्लस 1। जी एक्स प्लस 1। अब आपके पास ठीक है, जी एक्स मैं प्लस ये 1 पूछ है, रहा था बस। जी एक्स प्लस जी 1 जी है, है। कहाँ है, जी है। नहीं था, वो निकाला ये हमने, है। जी निकाला था ना हमने, ये हमने निकाला तभी हमारे पास आ गया। अब मैंने फिर इस एक्स की जगह पे एक्स प्लस 5 डाला और हमें ये पता चल गया।